Good evening to one and all present. Parents are the first teachers, guides, leaders, protectors, and providers for their children. And holistic development of a child is possible with commitment between dedicated teachers, motivated students, and enthusiastic parents. On behalf of Vidyapeeth family, I welcome you all for a session on parent counseling by an eminent psychologist and counselor, Mrs. Saloni Priya. Warm greetings to most respected Mrs. Saloni Priya, resource person for the evening, Dr. M. Kasturi, Principal, Birla Balika Vidyapeeth, enthusiastic parents, colleague teachers, and beloved students. Myself, Mrs. Achla Verma, Dean Academics, Birla Balika Vidyapeeth, once again welcome all of you for the session. And it is indeed my privilege to brief you all about a school with a legacy. Birla Balika Vidyapeeth was established in 1941 with the sole aim to educate the girls of freedom fighters, founded by the great visionary and philanthropist Shri G.D. Birla ji, business leader of the era. It was in the time when there were only a handful of schools, that too in cities. BBV was set up to address the need to nurture the brilliance of the girl child. It is indeed another name for women empowerment and has made a difference for many in the past and will continue to do for many in future. Birla Balika Vidyapeeth has a unique distinction of being a progressive institution of learning and imparting quality education steeply rooted in Indian ethos and values. The school is affiliated to CBSE, New Delhi, and is a member of prestigious Indian Public Schools Conference and National Progressive Schools Conference. The school maintains an excellent academic record throughout the years and provides an all-round personality development with its innumerable co-curricular activities like NCC, band, football, athletics, horse riding, swimming, classical dances, music, art, club activities, international exchange programs, career counseling sessions, and many, many more. Birla Balika Vidyapeeth is certified by Great Place to Study by Global League Institutions in 2019, accredited by National Accreditation Board for Education and Training Quality Council of India in 2019. It also has British Council International Schools Award 2018-21 and maintains National Quality Excellence Award 2019 and is ranked 6th in India by Education World. The long list of our successful alumni is the testimony of the quality education provided at BBV. The school provides a happy learning environment and is truly a home away from home. And this free environment creates individuals who make difference in society. Truly, Birla Balika Vidyapeeth lives up to the slogan, the finest inheritance we give a girl child, wings to fly. I now invite our beloved principal, Dr. M. Kasturi, the guiding force behind the success of everyone at Birla Balika Vidyapeeth, to introduce and welcome Mrs. Saloni Priya, a woman of substance, pioneering varied counseling services from north to south and east to west. Please, Principal Ma'am. Yeah, thank you, Achila. Good evening to all of you. A warm welcome to you all. I am delighted to have you with us today for an interactive session with Mrs. Saloni Priya, a motivational speaker who is interacting with you on boarding school system and parental interface with the school and their children. Mrs. Saloni Priya is a counseling psychologist working in the area of educational management, human development, and training, student empowerment, and comprehensive counseling for more than 16 years. She is founder director of Umid Counseling and Consulting Services. Her foundation is Multi Speciality Positive Psychology Institution based in Kolkata.
She is motivational speaker and undertakes motivational training, capacity building initiatives, therapies, workshops, and individualized sessions. She is also the trustee of Umeed Foundation, an organization that works for underprivileged children in the field of mental health. She has a long association with Birla Balika Vidyapith as a motivational speaker and teachers trainer under faculty development program. She is a master trainer for Center for Cultural Research and Training, CCRT, New Delhi, under the Ministry of Culture, and conducts training sessions throughout the country. During pandemic, she has conducted more than 700 webinars with educational leaders, students, and parents, spreading hope. She had done more than 100 workshops on child safety, abuse prevention, POCSO law, RTE, and teachers' role in child's rights. As a CCRT resource person, currently giving lot of training on new education policy implementation and required changes in education sector. She has pioneered herself in conducting parenting workshops for schools and conducted workshops and interactive sessions for parents on issues like communication with child, building self-esteem in the child, techniques to discipline the child, handling sibling rivalry, value teaching, adolescent handling, teen stress, challenges of working moms, and single parenting, teaching life skills, etc. She has been awarded with the Lion International Award for Educational Entrepreneurship. She is the leading voice in the education in the country for Mentor magazine, and she is now on their advisory board. We are happy to have Mrs. Saloni Priya on the board with us today. She will be addressing all the parental issues with the girl children of boarding schools and the boarding school system. This session will be for 90 minutes, 45 minutes presentation, and 45 minutes of interaction, question and answers between the parents and the speakers. I am sure Mrs. Saloni Priya will keep you more entertained with her valuable message to the parents. And I request all the parents to stay till the end, please. Now over to Saloni Priya, ma'am. Thank you, Dr. Kasturi. Thank you, ma'am. Thank you so much. Always pleasure to be with you and your team. And today I am meeting the most integral part of our boarding schools, that is our parents. Yeah. So my good evening, namaskar, and welcome to all parents. 2020, the year that was. साल तो चला गया है, लेकिन इसने बहुत कुछ हमारे जीवन में हमेशा के लिए बदल दिया. Last year, mental health month declare किया गया May month. And as a psychologist, I would like to share parents that last 1 year has been comprehensive learning for people like us who have dedicated their lives to education, adolescent, their growth, learning, this entire education environment. When I'm talking about 2020, we are talking pandemic. Since 22nd of March, the life unprecedented change. और आज हम बात करते हैं कि इस पिछले 1 साल की पैंडेमिक में इस मार्च के पीछे क्या-क्या क्या हमने देखा, क्या महसूस किया और किस तरह से इसने हमारे जीवन को बदल दिया. As a psychologist, I have always observed and tried to develop an insight that how our world and the changes there affect our social and our psychological. And that is I take this opportunity to share with you. Birla Balika Vidyapith, a premium institution which you must have chosen with lot of preparation and belief, because it is institutions like this which always promised and delivered a holistic
development of our children, particularly our little princess who would join a school like this, and after 6 to 10 years would come out as graceful ladies with focus on their future, strong shoulders to hold responsibilities, and empowered with IQ, EQ, and SQ, intelligence, emotional well-being, and social behavior to deal with society. And that is why in the last 4 months, I have been involved with a research study on how adolescent and children have been affected. इस पूरे कोरोना ने हमारे सोशल सपोर्ट सिस्टम्स चैलेंज किया, क्योंकि जो हमारा सोशल सपोर्ट सिस्टम है, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारी फैमिली, हमारे सोशल, ये हमें हेल्प करते हैं एग्जिस्ट करने के लिए, थ्राइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए. When we feel that we belong, we are valued by someone, that gives beings that energy. It is like which takes us to blossom and have beautiful flowers. Corona में हमने लगातार कहा maintain social distancing, and I have always thought to keep ourselves safe from this coronavirus, we needed physical distance, not social distance, because it is the social connect which would have taken care of our mental health. और इसीलिए अप्रैल में धीरे धीरे जब हम समझने लगे, जूम मीटिंग्स होने लगी, फैमिलीज कनेक्ट करने लगे, started spending time indoors, and a lot of new things what I was seeing dear teachers and parents. Today we are all working as a community of caregivers, because a person who is a teacher here in Balika Vidyapeeth is a parent in some other school. And that is why when we are talking about social changes, society, and bringing up our little girl children into graceful ladies, the year 2020 made a lot of us change our lifestyle. I am sure you must have also got a lot of health advisories, lot of advisories on building immunity. I think the entire the medical fraternity has been relentlessly coaching us, talking to us, and of course, we all are members of WhatsApp University now in the life. लेकिन काफी कुछ हमें जानकारी मिली और शायद कहीं कहीं हम सब ने अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए. और ये जो चेंजेस हम लाए, इसमें बार बार एक क्वेश्चन आया कि स्कूल तो बंद थे, बट क्या पैंडेमिक ने एजुकेशन रोक दिया? मैं चाहूंगी आप इसको सोचें, एंड इफ यू कैन शेयर इट ऑन द चैट बॉक्स विद द स्कूल, बिकॉज स्कूल तो बिल्डिंग्स बंद हुई, न तो स्कूल बंद हुए, न पढ़ाई हुई. Learning and teaching went to a very different level. Our classrooms were replaced by Zoom rooms, chat rooms, Google classrooms. The mobile phones were not allowed in school. Now the entire educational service was transferred to the same phone, the smartphones and the tabs and the laptops, which became a medium to connect. And this virtual reality definitely provided a way. And I must say, parents, that 24/7 parenting was never as demanding as it became during this. So many of you, all of them had unprecedented difficult situations, but school closures, your work from home, very few help available,
physical distancing. It was a lot to navigate, but your drawings became classrooms and education started. Thanks to all your help, your support, and it has been tremendous. I would definitely applaud all the parents because it is this partnership, this communication, teachers guiding parents, children catching up, we together adapting to this new norm. And I would definitely like to appeal to everyone on this platform that this normal is not about that things will be back because now there's no going back. ऐसा नहीं है कि हम वापस नहीं जाएंगे. Now we are moving forward, living with this new reality because there is a second wave. There is already a talk of virus having another kind of mutation, and a third wave is already all over. That is why, parents, the new normal is a call for some very fundamental questions to be answered. हमारे रूल्स तो multifaceted हो गए हैं. I am sure you have done a lot of activities with your children at home, but after 5, 6, now more than 18 months, it is very. I am sure most parents are doing all they can in enormously difficult circumstances to minimize and mitigate the significant disruption. Disruption तो जरूर है और इसीलिए when parents put up their socks, educators ने उनका पूरा साथ दिया, an entire country पैंडेमिक में इस डिजिटल रेवोल्यूशन से छोटे से छोटे शहर और बड़े से बड़े इंटरनेशनल स्कूल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, they all went into this multiple digital upgradation in school infrastructures overnight, technical skills के upgradation, series of workshops which teachers attended from CBSE, from NCERT, from NIC, and unlimited blended learning हुई जहां टीचर्स ने पहले बहुत कुछ लर्न किया. They became more alert, they became much more aware of the challenges, and it was not easy, parents. It was a very difficult uphill task to adapt and to accept that many of their skills and many of their very, very professional, very set patterns were being challenged. But they carried on, enabling your children, talking to your students, and providing as much support as possible to parents. In this journey, there were new relationships. Syllabus definitely was being changed, reduced. There was a lot of confusion. And since I am in Delhi, and we are constantly talking about various new assessment patterns, policy changes, the skill development during these digital classes became a question. और यही हमने देखना शुरू किया कि डिजिटल कंटेंट तो बहुत है, कोई टीचर उतना कंटेंट क्लासरूम में नहीं दे सकता जितना आज इंटरनेट के माध्यम से हमारे बच्चों को एक्सेसिबल है, कॉस्ट फ्री है, एक्सेसिबल ज्यादा है. क्लासरूम के वीडियोस आप 10 बार देख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम बहुत है, एक्सेसिबिलिटी बहुत. लेकिन इन सब के बावजूद क्यों फटीग आने लगा, क्यों स्ट्रेस आने लगा, क्यों लर्निंग ऑर्गेनाइज होने लगी, और बहुत से बच्चे, सिंस आई constantly talking to a lot of children, also Indian families in Middle East, in Canada, US, a whole lot of Indian students in Singapore,
in Australia, many of them have been taking counseling help, and parents, you being there with your children have made such a huge difference. But so many places, children were all by themselves, and at many points of time, this digital learning was being manipulated. Some children, they felt, ma'am, it does not feel real. टेलीविजन पे, लैपटॉप पे नेटफ्लिक्स देखना, गेम्स खेलना, टेक्नोलॉजी को इंटरटेनमेंट के लिए यूज करने की तो बच्चों को बहुत आदत है. लेकिन the mindset was that when teacher is there and when she gives me instruction, then I learn. Excuse me, ma'am. Yes, Achha. About that there will be nothing like that we are moving back. A lot of us thought that this pandemic में ये चीजें गुजर जाएंगी और फिर पहले जैसा हो जाएगा. Let us be very realistic, and being an adult is all about accepting reality. और reality यही है कि पहले जैसा जो अच्छा था उसको हम अगर alert, aware और adapt नहीं करेंगे तो हम न्यू नॉर्मल के पार्ट नहीं बनेंगे. और ये एक्सेप्ट या अडेप्ट करने में मुश्किल क्या आती है, क्योंकि इंसान का दिमाग जो है वो सोचता भी है और महसूस भी करता है. हम बातचीत में कह जरूर देते हैं कि दिमाग से सोचो दिल से नहीं, बट सच तो ये है कि दिमाग सोचता भी है और महसूस भी करता है. इट्स अ सेंटर ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस एंड थॉट्स. एंड दैट इज व्हाई जब चीजें हमारे चारों तरफ की चैलेंज की, उन्होंने हमारे जो बने हुए पैटर्न्स थे, जो हमारे माइंड में ये प्रोग्राम्स बने हुए थे किसी भी चीज को डील करने का, वो हमें चेंज करना पड़ा. और इसी चेंज से हमारे अंदर उलझने भी आई, एंजाइटी भी हुई, परेशानी भी हुई, लेकिन फिर भी हम सब ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे. और जब हम ये आगे बढ़ते रहे तो हमने ये महसूस भी किया कि इस समय बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है. बहुत से बच्चों के लिए भी ये नए तरीके की जो पढ़ाई थी, आप देखिए एक आम बच्चे के लिए खास तौर से इंडिया में ये जो जितने डिवाइसेस थे, टैब हो, लैपटॉप हो, स्क्रीन हो, आपका कंप्यूटर हो या उनका स्मार्टफोन हो, इसको हम रिलैक्सेशन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा यूज करते थे. डू यू एग्री विथ मी अचला मैम? हमारे बच्चों के लिए रिलैक्सेशन, इंजॉयमेंट, ये डिवाइसेस थे. अब बच्चों के लिए भी इसको चेंज करना कि यही डिवाइसेस से अब मेरी पढ़ाई होगी हैज बीन वेरी चैलेंजिंग. और यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत रोल था कि यू सुपरवाइज चिल्ड्रन, आप एक रूटीन बनाइए. क्योंकि देखिए एज अ साइकोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट जब हम बात करते हैं तो हम यही देखेंगे कि किस तरह से ये स्कूल बनाए गए थे. आज बिरला बालिका विद्यापीठ एक लेगेसी इंस्टीट्यूशन है. इंडिपेंडेंस के पहले से इसकी स्थापना की गई थी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच से. एंड पेरेंट्स उसी सोच को हर दिन, हर एक्टिविटी, हर फंक्शन में बालिका विद्यापीठ के प्रिंसिपल और टीचर्स उसको लगातार एक ड्रीम की तरह से again and again re-establish or reaffirm करते हैं. And I can say that parents, because I'm almost like a parent, like all of you, to Balika Vidyapeeth, because my own family members, the children are getting educated here. And I have always found that personalized touch, that care, that very empathetic approach, which makes this school stand apart. And what Corona has done is, parents, it has challenged that for us. That is why it has something which we all need to talk about today and think about it. It was all about more and more people feeling confused that what is really important for children. And that is where IQ, EQ, SQ, और आज अगर आप देखिए तो देशों के भी सक्सेस में जीडीपी से ज्यादा हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं.
कि which is a country which is very happy. और इन नई सोच के साथ जो एजुकेशन है उसमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि अब हम इस blended learning को समझें. I wanted to share this with all of you parents that what is it which children are feeling. पढ़ाई तो हो रही है, कोर्स भी कंप्लीट हो रहा है. Yes, Are you Achla? sharing the screen, ma'am? Are you sharing the screen? It is not showing, Achla. What is she missing? Actually, me and my husband both are working, and my daughter is staying with her grandparents. So she was attending the online classes, and she's very much active, by the way, and she liked the mobile phone very much, so she is using it, and the whole day we need to monitor her, and we need to ask her that do your homework and all, and so it's a tough job. So that's why we have taken the admission in Jilla Balika Vidyapith, so that the boarding school experience can make her more independent, more you have to sit here. Absolutely, ma'am. Thank you for sharing that. And that is exactly what this wonderful school and the boarding schools offer, ma'am. You know, Yeah. I wanted to share this with all of you. This research which we were doing, there are more than 10,000 students of boarding schools who have been sharing information, and many of these children are in boarding schools outside our country also. You know, what were the 6 most important things which children shared? And these are mostly children from classes 8 to class 12. The teachers and principal will be surprised, but most of the children, they shared that a place where I was myself and I felt independent. That is what was my school. So it was such a wonderful thing, Dr. Kasturi, to hear that from children. Yeah. Yes, ma'am. More than 73% children, ma'am, they said that if I have to describe my school, and more so in pandemic, I have realized the value of my school, and I would describe it as a school where I belonged. My school was a place where I was myself. I had an identity and I was independent. And I had questioned some children the other day when I was talking in the college graduates. I said, but your generation always talks about being digital friendly and freedom. They said, ma'am, now we are more, I would say, captive, because now we are so much more dependent on gadgets that we are not free. And that is what is the new reality. The reality is the children shared that, ma'am, in school, I was learning something every day, not necessarily from books, but by my observation, by experience, by organizing events, by writing something, by scolding from teachers, by looking at what my friend or some other classmate did. That learning has stopped. And ma'am, no amount of digital webinars are going to help me to do that. And I really appreciated that, because yes, our children are smart and they do understand. A lot of children wrote, to my surprise, that what school means to you. The answer they wrote was, school means to me routine, structure, and discipline. And these are the things which so many times we as adults, teachers, educators, and parents feel that children hate it. They hate us for being strict, but children understand, and they said, ma'am, there was a structure, and that structure is missing. No amount of disciplining at home, ma'am, we have structure. Whether it is getting up, or whether it is eating, or whether it is sleeping. So many children have started feeling, in school, I was fitter. I was much more active. And I'm not talking only about body weight here. I'm talking about that feeling of wellness, that well-being. Ma'am, I was much fitter when I was going to school. In school, I was more engaged. I had no time to think. And school ensured there was more gadget control. Now I am addicted. Dr. Kasturi, there were maximum students when asked that write one thing which you feel
that in pandemic you have found difficult. Majority said, ma'am, we are getting addicted. We are not able to help it. When I was in school, there was no question of me looking at my phone for more than 10 minutes or half an hour because we were so engaged. Yeah. And this is what is the psychosocial impact of pandemic parents. And why I am talking about it, because I know, as I was sharing in the beginning of my presentation, we all have been trying to abide with a new lifestyle. And I'm sure each one of you have tried your best. But somewhere there is a knock. कहीं ना कहीं ये आवाज हर तरफ से अब आ रही है कि मैं और आप तो एक बार को 50 से अगर आगे हैं तो सोच भी सकते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन बच्चों के लिए उनको टेक्नोलॉजी के साथ ही आगे बढ़ना है, इससे अडेप्ट करना है और अपने लर्निंग पैटर्न्स चेंज करने। लेकिन इस पैंडेमिक ने एडोलेसेंट को सबसे ज्यादा अफेक्ट किया है, बिकॉज एडोलेसेंट जो है वो आइडेंटिटी स्टेज है। यही वो समय है जब एक इंसान को सिक्योरिटी चाहिए होती है, बहुत सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ ही इस उम्र में 12 साल से 18-19 साल के बच्चे, which I'm talking class 6 to class 12 primarily, they explore, they try, और इसी एक्सप्लोरेशन से उनको अपनी आइडेंटिटी, अपना एक अस्तित्व की पहचान बनती है। और ये बिरला बालिका विद्यापीठ जैसे स्कूल जो इतनी सारी एक्टिविटीज बच्चों के साथ करते हैं, ये यही दिखाता है, they are able to give that exposure to children that see and express yourself so that you find an area which will be of success, and then later on maybe a career and maybe a passion in life. This social distancing has primarily challenged adolescents the most. There is nothing more calming than spending quality time with another human being who makes you feel safe and understood. I am quoting a psychologist from Harvard, E. Seligman. In fact, फेस टू फेस जो इंटरैक्शन है बच्चों के साथ, ये बहुत तरह के हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स जेनरेट करते हैं। आज आप बार बार सुनते होंगे डोपामीन, एंडोर्फिन, ये जो हार्मोन्स हैं सोशल इंटरैक्शन से, जब वो मैंने असेंबली में कुछ बोला, टीचर ने मेरे को आंखों में देखा और अप्रिशिएट किया, बच्चों ने ताली बजाई, मुझे सर्टिफिकेट मिला, आई वाज गिवन अ चांस टू आंसर, ये जो पूरा एक एनवायरनमेंट है जो हमने बच्चों के लिए खत्म कर दिया है विद पैंडेमिक, इट हैज अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग इम्प्लीकेशन। ये फेस टू फेस इंटरैक्शन जो है ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि इंसान के लिए उसके दिमाग में जो ये पूरा हमारा सर्किट है ना, देखिए एक तरफ तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं जहां मशीन्स और रोबोट्स इंसान के ह्यूमन इमोशंस को इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप अगर आपके घर में आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आप आजकल के जो नए सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बिल्कुल ह्यूमन वॉइस का रेप्लिकेशन कर रहे हैं, दे आर सेंसिंग ह्यूमन इमोशंस एंड रिस्पॉन्डिंग। दूसरी ओर हम उसी हाई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड के लिए जब अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं तो इन बच्चों का अपना कोई रेपर्टेयर ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट, सोशल रिलेशनशिप्स, आई कॉन्टैक्ट नहीं है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिग डिजास्टर। दैट इज वाई जितना भी हो सके सी टू इट दैट ये जो बच्चों में गैजेट डिपेंडेंस हो रही है, ये जो इल्यूजनरी सेंस ऑफ कनेक्ट है, आई हैव 400 फ्रेंड्स ऑन द फेसबुक, इट इज नॉट फ्रेंडशिप, इट इज नॉट रियलिटी, इट इज वर्चुअल। वर्चुअली मैं यहाँ से बैठ के अगर मुझे ट्रैवल करना है एम्स्टर्डम तो मैं सारे टिकट्स बुक करा लूं, मैं वहां की पिक्चर्स देख लूं, मुझे पता चल जाए कि वहां पे होटल कैसे बुक करना है, ऑल दैट डिजिटल इज वेरी गुड, बट डिजिटल कनेक्ट कभी भी सोशल रिलेशनशिप्स को नहीं रिप्लेस कर सकता है, और खास तौर से 12 से 18 साल के बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। Okay. One parent is asking, ma'am, if you can put some light on how to handle sibling rivalry. Okay, ma'am, I'll come to that.
I am not surprised with this question because a lot of children, when they have taken counseling help from me during this pandemic, they have spoken about relationship conflict. And one of these girls shared, she said, ma'am, I have been in boarding. After so many years, I'm staying at my home for the last 10 months. At that time, it was 10 months of pandemic. And she said, ma'am, I just cannot get along with my brother. I think we are two very different individuals. And while counseling her, Achla, I was just telling her, beta, you tell me anybody who can say that my brother or my sister is identical to me. The entire understanding of human relations is based on this principle कि हम सब अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग और यूनिक होने का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से हर समय डिसएग्रीमेंट में हैं. हम डिफरेंट हैं, लेकिन डिफरेंट के साथ ही एग्जिस्ट करने को मैच्योरिटी और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं. Today it is your sister or brother, tomorrow it will be a roommate, and then later on in life it is a person working with you in the next cabin. And that is why ये जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये 3 स्ट्रीम्स हैं. अगर आप स्टडी करें पेरेंट्स तो आप देखेंगे कि सोसाइटी को जब बहुत अच्छे से स्टडी किया गया तो ये बनाया गया कि बच्चों को हमारे यहाँ रामायण महाभारत से लेके जो हमारे माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स हैं, और आप डिफरेंट रिलीजन्स के भी स्क्रिप्चर्स में देखिए तो आपको दिखेगा कि सोसाइटी के फ्रेमवर्क इस पे था that children should after a certain age be sent away from their home. Home should remain a place of emotional bonding, safety, and a lot of love. But the school would become a training center, a place where children will be loved, they will be cared, they will be kept safe. And this safety was not only physical, it was emotional also. And from there, children will learn to be their best. They will explore, they will grow, they will try, they will fail, but they will not give up. And that is what is the culture which today the boarding schools have carried on. I'm a very firm believer as an educator and as a psychologist parents that in the times to come, it is boarding schools who will be mandatory for children to be there. Because it is a holistic environment created, totally concentrated on children. Today, I, as a working mother, for the last 24 years, I'm working. I have also gone through the same challenge, and I send my boys to the boarding school because the reason is that it is not no longer, I am sure none of you who are attending here as a parent, आप में से कोई ऐसा parent नहीं है जिसने अपनी बेटी को इसलिए भेजा है क्योंकि वो punishment है. ये पुराने जमाने की बात थी कि लोग गुस्से में कहते थे कि तुम बात नहीं सुनते हो, तुम्हें हॉस्टल भेज दें. Today, I and you, we look at a hostel as a place which will be able to give my daughter what I cannot give at home. So the parents who agree with me, please raise your hands. How many of you agree with me on this कि yes ma'am? जब हमने बच्चों को हॉस्टल भेजा तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही था. Thank you so much. I can see 24 plus. My God, now there are 32 hands up. Thank you so much. And that is why parents, when we send our children to boarding school, it is building another set of relationships. It is a relationship which we create that we are going to trust my daughter to a set of people who are professionals, who will provide just the right blend of love and training, discipline and safety, so that my daughter can be the best. This pandemic has definitely, because of the physical safety and the pandemic safety norms, challenged this. But I think we all need to move at that कोई भी life में जो uncertainty आती है, कोई भी जो इस तरह का turmoil आता है, वो कहीं ना कहीं एक नया order लाता है. जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि सागर मंथन से पहले विष निकला था, उसके बाद ही अमृत निकला था. तो ये जो थॉट चर्निंग हो रही है, जो ये इतनी सारी पॉलिसी लेवल्स पे बातें हो रही हैं, आज आई एम श्योर बिरला एजुकेशन ट्रस्ट व्हेन दे हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस पेरेंटिंग सेमिनार, दे हैव इनवाइटेड मी टू बी अ कैटलिस्ट. बट द आइडिया इज दैट द टीचर्स, आवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर कस्तूरी, and all of you as parents, let's do a thought churning.
लेट अस जस्ट टेक आवरसेल्व्स कि हम थोड़ी देर के लिए अपने को रोज की ये चीजों से और सैनिटाइजर और मास्क से और घर में डिटॉल से और बच्चों को कहने से कि अब मोबाइल बंद कर दो, एंड द चाइल्ड इज लाफिंग कि मोबाइल बंद कर दूं तो दिन भर करूं क्या, इन सब से हटा के थोड़ी एक लार्जर पिक्चर को देखें कि क्या हो रहा है हमारे चारों तरफ, वेयर आर वी मूविंग एंड व्हाट इज हैपनिंग। आज से 5 साल बाद वो बच्चा जो आज क्लास 10th में है, उसका हर कॉलेज एडमिशन और इंटरव्यू सिलेक्शन में क्वेश्चन यही होगा, हाउ डिड यू मैनेज 2020, व्हाट वाज योर लर्निंग इन 2020 व्हेन यू वर नॉट इन द बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल तो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आप जब अपने आप थे तो आपने क्या चॉइसेस की। Today, already higher universities have started talking about more holistic integration of learning because children have gone through digital learning, they have gone through self-learning, and now they will be having blended learning models. तो ये एक जो पूरा चेंज है, चेंज कंफ्यूजन और chaos भी हो सकता है अगर समझा ना जाए, लेकिन अगर चेंज को हम समझ सकें, उसको एक आकार दे सकें और उस चेंज के साथ समझदारी से आगे बढ़े तो ये चेंज ट्रांसफॉर्मेशंस लाते हैं। जैसे आप देखिए, अगर आप कैटरपिलर को देखिए तो कैटरपिलर को देख के, अचला मैम इज अ बायो टीचर, राइट अचला मैम, एन एक्सपर्ट, तो मैथ्स टीचर एंड द बायो टीचर्स, टेल मी, कैटरपिलर को देख के क्या कभी लगता है अचला मैम कि ये एक बहुत खूबसूरत तितली बन सकता है? हाँ। तो बहुत से जो ये चैलेंजेस हमारे लाइफ में है, ये जो अनसर्टेनिटी का पीरियड है, ये भी उसी तरह है। इट इज नॉट दैट आज को हम देख के नेगेटिव चीजों को अगर हम आने नहीं दें और इसको प्रोडक्टिव बना सकें, तो ये पैंडेमिक भी हमें बहुत से स्किल सिखा के जाएगा। एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ रिसर्च फाउंडेशन जिसमें उन्होंने ये 4 स्पॉट प्रोग्राम्स बनाए हैं फॉर हेल्पिंग पेरेंट्स। और ये प्रोग्राम्स में हम लगातार क्या कह रहे हैं, इट इज अ मॉडल विच टॉक्स अबाउट, इट्स अ वेकअप कॉल, प्रिपेयरिंग फॉर बैक टू स्कूल। बैक टू स्कूल में जो बैग्स हैं, दे हैव सेफ्टी टिप्स एंड द 4 I's आर इन्फॉर्म। पेरेंट्स एंड टीचर्स को कोलैबोरेशन और ज्यादा चाहिए फॉर इन्फॉर्मिंग। हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशंस को शेयर करें, इंटीग्रेट घर के माहौल को और स्कूल की जो एबिलिटीज और एसेट्स हैं, इनको इंटीग्रेट करने की जरूरत है। और ये तभी होगा जब हम बातचीत करेंगे। आज के प्लेटफॉर्म्स की तरह हम प्लेटफॉर्म्स पे आएंगे और डिस्कस करेंगे, सोचेंगे, लार्जर पिक्चर को देखने की कोशिश करेंगे, फियर और वरी से ज्यादा लॉजिक, रीजनिंग और लॉन्ग टर्म को सोचेंगे। We need to get involved into this. We cannot sit back and say, let us see what government decides. Government is also made by people like you and me. They have more responsibilities, and trust me, none of us would like to be in their shoes. हम उनकी जगह बैठ के पूरे देश के लिए शायद डिसीजन लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम अपने स्कूल, जो हमारा एक परिवार है, every school becomes a community. I think we need to involve each other and we need to have an intake of trust with each other. And that is why I think it is the month of June where we need to bring in the next order. We are living with this pandemic situation. We have got ourselves vaccinated, a lot of us. Our young children who are not yet vaccinated, and it will take some time, we will have to take a call. The multidisciplinary skill building which was offered in the school environment, how are we going to take it? इसको हम कितने दिन तक कॉम्प्रोमाइज करेंगे? इसके क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमारे बच्चों पे हैं? The diverse opportunities given by schools, right from the band to a speak mackey to a performance on stage, which builds up the inner world of a adolescent. If all this will be missing for 2 years, will my child be strong enough to be ready for society? I already have a lot of parents asking me to help them. Ma'am, she is not speaking to anybody. It is me, my earphone, my mobile, and I am shut in my room. I am eating also in that same room, and I don't want to talk to anybody. I am very bored.
what kind of a society are we going to prepare children to be if this becomes the norm? I hope this is not the norm. And that is why it is time for us to trust our teenagers. Like schools were all about trust, schools and boarding schools were always based on this very fundamental trust of children with their caregivers. I have a very, very fond experience of my own sister being in one of the premium residential schools. And I have always enjoyed and respected her relationship with her hostel warden. That when her warden retired, she traveled across the country to go back and be with her once again, because it was not about a position, it was the relationship. That in class 10 board exams, when this warden would come at 11:30 to check on her and give her a glass of Bonvita milk, that was the relationship of care which she always nurtured. And that is why parents, just wait a second on this slide, uncertainty in life. Accepting uncertainty does not mean that we are not having a plan. The global pandemic, economy, finance, health, relationship, all this which remains uncertain makes us think. Next. And this is what I want every parent to read. Every parent to understand that yes, as human beings, we all crave security. We want to feel safe and have a sense of control over our lives and well-being. But ये जो fear and uncertainty है, यही root cause है stress, anxiety and powerless. और ये powerlessness हमें कभी भी सही decision लेने को प्रेरित नहीं करती है. It can rather drain you emotionally and trap you in a downward spiral. So let us hope that we are able to look beyond. Next. This is what I have always felt. The two pictures which will show you the contrast, which is the call for all of us to think. आज पैंडेमिक की जो सबसे बड़ी बीमारियां हैं वो कोरोना से ज्यादा सर स्ट्रेस, डिप्रेशन, बर्नआउट, लॉट ऑफ फियर, चिल्ड्रन हैविंग एक्सट्रीम स्ट्रेस, और बहुत से ये स्ट्रेस सिम्टम्स इतने सटल हैं कि पता भी नहीं चलते. बहुत से लोग इसको बॉटल अप कर रहे हैं. मेनी पीपल आर सेइंग कि मैम थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल. और जैसा मैंने कहा, let's not even imagine back to normal. Let's move forward with new normal. And today, sit down with your children and as a family do this exercise कि पिछले इस एक साल में हमने अपने जीवन, अपनी दिनचर्या में, अपनी लाइफस्टाइल में वो कौन सी नई चीजें करना शुरू की हैं जो अब हमारी हैबिट्स हैं. उनको डिस्कस करिए और बात करिए कि अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको डर लगता है या you have uncertainties, are you talking about it? Because talking, listening, supporting, encourage that. And I can say that without an iota of doubt that every teacher of Birla Balika Vidyapeeth would always be ready to talk to children at any time, because I have personally experienced that with them. Next, and that is why this whole mental health which we are talking about, ये बहुत डीपली हमारे बच्चों को अफेक्ट करता है. ये देखिए, इंसान का जो दिमाग है ना, ये इस तरह से है. कहने को ये एक छोटा सा ब्रेन है जो हमारे सर में ऊपर के हिस्से में रहता है, लेकिन फैक्ट तो ये है कि ये हमारे पूरे बॉडी को सराउंड करता है. और इस तरह से देखिए, जो ये बॉडी है वो लोनली, एंग्री, अफ्रेड, हर्ट, ये जो इतनी कलर्ड हमारी बॉडी है ना, ये फिजिकल बॉडी के साथ साथ हमारी एक इमोशनल बॉडी, और हमारा जो ज्यादातर बिहेवियर है वो इस इमोशनल बॉडी पे ही डिपेंड करता है. अगर हमारा माइंड ऑब्जर्व करता है, ब्रीद करता है, लिसन करता है, पॉज करके कभी कभी सोचता है, नोटिस करता है, तो क्या होता है? Your entire body gets governed. और इसीलिए वो मेडिटेशन हो, वो माइंडफुलनेस हो, आपका योगिक क्रिया हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो, सदगुरु हो या बाबा रामदेव हो,
everybody is teaching you the same thing in different packages, which is listen, observe, breathe, take a moment and be there. And why this is important? Because यही है हमारी बॉडी को जो इस मुश्किल परिस्थिति, जिसके लिए हमारे पास प्रोग्राम्स नहीं है दिमाग में, क्योंकि हम में से किसी ने पैंडेमिक नहीं देखा, और इसीलिए आई वुड से दैट कि हम पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे पैंडेमिक में हम सब बराबर एज के हो गए हैं, क्योंकि हम सबकी लाइफ में ये पहली बार आया है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम अडल्ट हैं, हम इसको डील करना जानते हैं। ये तो पहली बार एक ऐसी स्थिति है जहां मैं भी 2 साल बड़ा हूं और मेरा बच्चा भी 2 साल बड़ा है। सो हम सबको मिलकर ही इसको लगातार इसको डील करने की नए नए प्लान्स बनाने पड़ेंगे, और वो प्लान दिमाग में ज्यादा जरूरी है और हमारे सोशल। नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी सिंपल वे फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम किसी भी नई चीज को करने की कोशिश करते हैं या हम जो पुराना कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है, तो वो ऐसे ही होता है। हमारे माइंड में ना ये छोटे छोटे ब्लॉक्स में प्रोग्राम्स बने रहते हैं, और आपका जो कंप्यूटर है ना जो आप यूज कर रहे हैं वो आपके माइंड का ही रेप्लिका है। इसीलिए आप देखिए कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू क्या है? यही कंप्यूटर का दिमाग है, और ये एग्जैक्टली ह्यूमन माइंड की तरह वर्क करता है। तो आज आपके बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत जो हो रही है वो यही हो रही है क्योंकि उनके सीपीयू में जो प्रोग्राम फिक्स था वो अब वर्क नहीं कर रहा है। डिजिटल लर्निंग में हम बैठ जाते हैं, क्लास में मैम दिखती हैं, अच्छा लगता है, हम बातें करते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन फिर हम उसको क्या प्रोसेस कर पा रहे हैं? अचला मैम, ज्यादातर बच्चे डिजिटल लर्निंग के बाद बंद कर देते हैं। टीचर सिलेबस खत्म कर रही हैं, कंटेंट दे रही हैं अपनी हर पर। मुझे उसी दिन एक टीचर कह रही थी कि सलोनी में 7 पीरियड पढ़ा के थकती नहीं थी, लेकिन 2 डिजिटल पीरियड्स में मैं थक जाती हूँ बिकॉज इतना मुझे स्ट्रेस लगता है। मैंने कहा मैम आप क्यों थकती हैं, आप बताइए। तो उन्होंने कहा शायद इसलिए थकती हूँ सलोनी क्योंकि ना वो बच्चों की आंखें नजर आती हैं, ना बच्चों के स्माइल, ना बच्चों का हाथ। वो जो बच्चे पीछे बात करते थे, कमेंट करते थे, वो सब भी तो हमें एनर्जी देता था ना। तो अब मेरे लिए डिजिटल एक स्क्रीन में, ब्लैक स्क्रीन के विंडो को पढ़ाने में मुझे इतनी इमोशनल ड्रेनिंग होती। और यही पेरेंट्स हम सबको समझना है। आपके लिए वर्क फ्रॉम होम में भी यही स्थिति है, बच्चों के लिए भी यही। एंड दैट इज वाई हमें प्रोएक्टिव चॉइसेस करने पड़ेंगे। आज आप में से ये जो 200 लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, थैंक यू। ये एक प्रोएक्टिव चॉइस है जो हमें कुछ एनर्जी देता है। बट यस, देयर आर मेनी मोर हु डिड नॉट, because we have to come together and talk, we have to accept each other। और तभी देखिए ये जो एक लाल सा बॉक्स दिख रहा है ना, हमें अपने माइंड के कई इन प्रोग्राम्स को चेंज करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं डीलिंग विथ थिंग्स एंड नॉट डिनाइंग। एंड दैट इज व्हाट इज उम्मीद टू मी, क्रिएटिंग पॉसिबिलिटीज। अब जब दुनिया बदल गई है तो हमें अपने प्रोग्राम्स बदलने पड़ेंगे, और ये बड़ों को पहले करना पड़ेगा। एंड इसीलिए पेरेंट्स और टीचर्स ने बहुत फिनोमिनल काम किया है पिछले 1.5 साल में अपने को चेंज करने का। लेकिन अगर उससे हमें दिक्कत है, हमें परेशानी है, तो प्लीज टेक हेल्प एंड अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैपनिंग। इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। नेक्स्ट, कॉन्फ्रंटिंग माई फियर्स। जो भी चीजें हैं जिनसे आपको फियर है उसके बारे में जरूर बात करिए, अपने बच्चों से भी बात करिए। इज देयर एनीथिंग व्हिच दे आर हैविंग फियर विद? नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अचला मैम। Yes, ma'am. डील एंड डिनाई बिल्कुल उसी तरह से है। जितना आप डील करें उतना ज्यादा आप लाइफ की रियलिटी से जुड़े हैं। जितना हम डिनाई करें उतना हम रियलिटी से भाग रहे हैं, और रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करने से ही सारे तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। यही बात मैं आपसे कर रही थी। एडोलेसेंट इन पैंडेमिक, your adolescents may be even more angsty, moody, defiant at the moment than normal, because ये जो स्टेज है यहाँ पे अपने आप को आंकने के लिए, अपने को सेल्फ असेस करने के लिए, अपनी ही उम्र के दूसरों के साथ उठना बैठना बहुत जरूरी है।
बोर्डिंग स्कूल के बच्चों को और ज्यादा दिक्कत हो रही है बिकॉज यही उनका एनवायरनमेंट था। ये बिल्कुल बच्चे वैसे ही हो गए हैं जैसे कि आपने एक पौधे को उसकी जमीन से उखाड़ के कहीं ट्रांसप्लांट कर दिया। So many children are feeling like that. And that is why, next slide please. This pandemic is very, very tough for adolescent in this identity stage. Throughout the country, we are talking about this. Can we start looking at some more methods of building trust and looking at a dialogue between the school leaders and parents, understanding that what exactly we need. We need safety for our children, no two ways about it. But as you can see on the next slide, next please. I have put in some more questions. Parvesh sir, next slide please. Social distancing versus social connect. I was speaking about this only, that presence of real people in our life will never be replaced by anybody else. It is the nature's natural stress reliever. It is an added bonus, and that is why हमारी बॉडी के जो नेचुरल रिस्पॉन्सेस बनते हैं ये 13 साल से 21 साल के बीच में, हाउ टू डील विथ थिंग्स एंड हाउ नॉट टू रन अवे विथ थिंग्स, इसके लिए रियल लोगों के साथ का कांटेक्ट बहुत जरूरी है। और ये जो पैंडेमिक में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इस पे बहुत स्टडीज है कि लेट अस सी कि 3 साल 5 साल तक इसका क्या इफेक्ट होगा। जहां तक हो सके टीचर्स और पेरेंट्स कोशिश करिए अपनी अपनी स्कूल कम्युनिटी में कि हम किस तरह से जल्दी वी कैन क्रिएट मोर फिजिकल कनेक्ट। नेक्स्ट, बिकॉज इसका सबसे ज्यादा डैम्पनिंग इफेक्ट एडोलेसेंट पर ही है, और एडोलेसेंट जिनकी अगली 50 से 60 साल एवरेज लाइफ स्पैन्स बढ़ती जा रही हैं, तो the long-term impact of this would be much higher. Very difficult for us to even comprehend it right now. The idea is, let us come together as soon as possible and allow, with all safety precaution, as much face-to-face interaction as possible. Next. I've given you some things here on gadget management. YouTube surfing, WhatsApps, gaming, chatting, even to some extent children getting into mindless entertainment. इतना gadgets के ऊपर content create किया गया है because it is a booming business for people. जितना बच्चे क्लिक कर रहे हैं, जितना बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं मीडिया और कंटेंट, अगर इसका 60 to 70% नॉन एजुकेशनल है, it is not helping anybody. Our children are not becoming masters of this technology, unfortunately. They are becoming slaves of this technology. And parents, please make it a point. I always say that बहुत बड़ी problems के लिए कई बार बहुत बड़ा solution की जरूरत नहीं है। बड़ी problems के कभी-कभी solutions बड़े छोटे होते हैं। और एक बहुत छोटा solution है, just switch off devices. अब तो शायद हमारे कोरोना समय में हमारे घरों में डिवाइसेस ऐसे हैं जो कभी ऑफ ही नहीं होते, चाहे वो टेलीविजन हो चाहे फोन हो। प्लीज मेक इट अ हैबिट कि इस समय सारे डिवाइस बंद होंगे, इस समय सारे मोबाइल बंद होंगे, इस समय कोई टेलीविजन नहीं चलेगा, हम बात करेंगे, हम रियल लाइफ में रहेंगे, वर्चुअल में नहीं रहेंगे। वर्चुअल में कैचअप करने के चक्कर में हम रियलिटी से ही दूर हो रहे हैं। और छोटे बच्चों में तो लैंग्वेज डेवलपमेंट पूरी तरह से अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज आप टीचर से पूछिए, बच्चे अब अपने फ्री लेसन में, होमवर्क में, आंसर्स लिखने में या ऐसे लिखने में भी व्हाट्सएप की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने बच्चों को बेसिक सब वर्ड्स के भी स्पेलिंग्स नहीं पता है बिकॉज वो शॉर्ट फॉर्म यूज करने की आदत है। सो टुडे पेरेंट्स, हमारी जनरेशन ने स्काइप भी सीख लिया, आज हमने जूम भी सीख लिया। क्यों सीख लिया?
क्योंकि हम में से जितने भी 40 के पार हैं, हमारे स्कूलों में कंप्यूटर नहीं था, लेकिन हमने क्यों सीख लिया? क्योंकि हम अडेप्ट कर सकते थे, हमारे बेसिक स्किल्स थे, हमारा बेसिक लैंग्वेज स्किल्स था। लेकिन आज हमारे बच्चों के पास बेसिक स्किल ही नहीं रहेगा तो कल की नई से नई चीजों में अडेप्टेशन नहीं होगा। That is why daily real time, dear time, they are very, very important. What is a dear time? Drop everything and read. Switch off time. I have made this for a lot of families. Make this time that we will switch off devices and we will switch on life. Art and craft की जितनी भी चीजें हैं, they are very free expression of intelligence. Please don't think art and craft is just drawing or painting. It is actually a very important left brain activity for completeness of a human aesthetic sense. That is why please see to it that your children are using their time for these. I know boarding schools are so good at it that they have always done these things for children. Today, if for physical safety, we are not sending children to these schools, are we trying to complement it? Next slide. Lot of touch, lot of bonding. And this is what I would remember of Birla Balika Vidyapeeth School. Amazing memories, which I am sure are bringing tears to the eyes of teachers and students alike. This is what is reality. This is what is life, children. And these are not competitions and these are not games. If you really ask me, this is training for life. This is being yourself. And this is what no book, no laptop can ever do. Healthy mind resides in a healthy body, but sports, movement, they are actually responsible for social and emotional wellness. Next slide, please. Are we able to trust teenagers? Can we take now again that yes, children have grown up, give them responsibility, build resilience, and teach them to deal? The new normal today is all about, can we come together and talk about reopening schools? Let's not wait only for governments. We have always trusted, we have done so many new things. Why can't we come together and again trust each other and look at what can be the new normal which we choose in the interest of our children? Next, this is what I was sharing with you, parents. Already the campaigns have started. A lot of school leaders are coming together internationally. And this is the 4-point program they have created: inform, integrate, involve, and intake. Integrate all the safety measures, integrate technology, move into blended learning, inform people about the new challenges, and involve parents, involve experts, involve professionals, and collectively let us intake a sense of trust and responsibility. And with that, we will be able to move into a new normal. Next, the new normal, which will be based on multidisciplinary skill building. And the entire school environment, which was doing so much, can we again relook at doing some part of it, maintaining safety? But this will only be possible, friends, when we will look at the larger picture and trust each other. Next. Next. Diverse opportunity, something the 10 years and 6 years of schools, they teach us to be ready for life. Communication, appreciation, and acceptance. These wonderful girls, they all remind us that this is the global scenario in which they will have to survive. People from different communities, religions, ethnic backgrounds, and countries have to coexist. Technology has made this globe a global world, which is now considered a global village. This acronym of Global Village actually talks about the accessibility thanks to technology, but it has huge challenges. Look at it, so many of you as parents working from home. Has our work hours become lesser or more? Even 8:30 at night, you have a
video conferencing still happening. So it is adaptation and acceptance. Children will need a lot of trust and a lot of acceptance from us. It is time for us as parents and teachers to again involve and integrate ourselves into dialogues of trust, because the schools are environments created for our children. And we have trusted schools. I can say that for myself, parents, that whatever I am today, a very large part of it, I owe it to my school. And thanks to my parents that they selected schools and trusted the schools to shape me what I am. And that is why schools were never buildings, and they are not just institutions. I loved it when children wrote this, and it reinforced that, ma'am, school is a place where I belong. School is a place where I felt independent and free. Next, the social distancing versus teaching social relationships. That's the question we have in front of us. और ये नहीं है कि इसका जवाब मैं आपको दे दूंगी. Rather, मैं आपसे अपील करूंगी, and I am sure Dr. Kasturi will see to it. This is a case study, school leaders and parent partnership. The lady whose picture I have put in, you can see she's addressing the parent engagement conference, Dr. Karen Mapp. She's a senior lecturer on education at the Harvard Graduate School of Education and the faculty director of the Education Policy and Management Master's Program. Over the last 20 years, Dr. Mapp's research and practice focus has been on the cultivation of partnership among families, community members, and educators that support student achievement and school improvement. I would like you to listen to her YouTube conversation on what her suggestion is. I am sure you will be able to look at that time has come, then we cannot sit waiting for a government order. Every school community will have to engage, will have to have discussions, will have to trust, and we will have to decide that this is how we can move forward. And I am sure Dr. Kasturi and Achla ma'am, this YouTube Connect can be shared with all the parents so that they can watch it. Yeah. Next, it's a very, very interesting work which she has done. And that work is totally based on hold on to life. And she says that the happiness quotient of life now is only one thing, hold on. So we are all very lucky. We are alive. We have survived. And yes, we have all gone through unprecedented grief, loss, insecurities. But if we have to fight back, we have to fight fit. And fitness is not only physical. Emotional fitness is highest. इसीलिए आप देखिए, जब आप बहुत थक जाते हैं तो 3 अच्छे से हमने नहाया, साफ कपड़े पहने, शांत जगह में, और हम 6-7 घंटे सोए, हमारी थकान दूर हो जाती. लेकिन जब आपको इमोशनल थकान है, फटीग है, जो कि इमोशनल है, तो आप देखिए सोने से, कुछ भी करने से वो फटीग इतनी जल्दी जाता नहीं है, till you are able to talk. And that is why it is time for more talk, more listening, more connect, hopeful, helpful, and healthy. The best thing to hold on to in life is each other. More than ever, we need this human touch, this connect, and this understanding with each other. That only will create the safety net for our children and prepare them to be stronger, to be able to survive in this digital world. Next, I'll be taking questions from here, but I would definitely like to leave all of you with this one thought. अगर आप इस पेड़ को देखें, तो इस पेड़ के सामने खड़े होके मैंने यही सोचा था, this was once just a seed. ये इतना बड़ा विशाल पेड़ किसी दिन तो शुरू में एक बीज ही था. But look at it today, what it has become. Today also, we all in this new normal have to sow seeds of new habits. We will have to relook into sowing trust and having a certain amount of belief, which will give us ability to take a risk
and move forward. Move forward. Next, enter please. Move forward with mind and heart together. Looking at the realities to integrate. We listen and we care. And that is what the school would always propagate. And I, as a psychologist, as an HR expert, I wear many hats as parenting coach and a life skill trainer. I'm also a parent of two big grown-up adult boys. When I look at life at large from these various aspects, I have always felt this is the time to hold on to each other, to connect, to build in more trust, and not let technology erode us of the values and the relationships. Technology should always be there to assist us, to make us more effective. Technology cannot be allowed to make us cripple, and technology should not be used to make us slaves. And this is a very huge challenge which we all have when we are talking about designing the next few months and the next few years of educational experience and environment for our children. So I do hope that my presentation today has made you have some more questions. और इन questions के साथ अगर हम कुछ चिंतन करेंगे, कुछ मंथन करेंगे, तो कुछ एक नई चीजें जरूर हम अपने लिए डिसाइड कर पाएंगे. But yes, my sincere apologies for the technical issues which were happening, some of course from my end. I felt very pained, and thank you so much for being so patient. I can still see there are more than 150 people aligned here. So over to you, Achla ma'am. If parents have some questions and they would like to share, I would be very happy to answer that. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for all the enlightenment that you have given us regarding this topic. Miss Poonam Shivangi wants to know, ma'am, how to control this kind of gadget dependency of the children and stop the misuse. Gadget dependency is basically because of three reasons. So Poonam, you will have to look at what exactly is the reason for that. One, the common one is that gadgets are the only ways of recreation with children, and most of the time when they are missing real people, they are substituting it through gadgets. Second reason for gadgets is when children have a kind of a, I would say, obsessive compulsion that yes, I have to keep playing this game. So if your child is addicted to a gadget because of playing a game or following up, and it is an absolutely non-educational purpose, like a lot of very young children nowadays are all the time onto YouTube पे कोई ना कोई वीडियो कुछ ना कुछ देखते रहना, they are doing that. If that is the case, then ma'am, we have to look at constructive engagement. They have to be given some kind of a physical activity, involved into some responsibility. And if it is becoming out of hand, please still use the very old method of a certain amount of switch off time. ये जो हमने unlimited access of Wi-Fi हर घर ने लगा लिया है, and we have no monitoring of it. It is not healthy. It is just making children absolutely addictive and dependent. Please use gadgets. Please teach your children to use it. And the third very common aspect of children getting dependent on gadgets is for pure entertainment. कुछ और करने को नहीं है, कुछ तो काम नहीं है, कहीं जा नहीं सकते हैं, बिल्कुल बोर हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो हम कुछ ना कुछ, तो बोर होने के बाद पेरेंट्स अगर घर में कुछ भी ऐसा नहीं क्रिएट करेंगे जो बच्चों को इंगेज करे. इट इज लाइक बच्चा 10 बजे उठ रहा है, वहीं पे बिस्तर पे खाना खा रहा है. 10 बजे भी क्यों उठ रहा है? क्योंकि 10 बजे से डिजिटल क्लास है. जिस दिन क्लास नहीं होती है वो 12 बजे भी नहीं उठता है. If that is the kind of routine we have at home, ma'am, then for children to be gadget dependent is very natural. Rest, ma'am, very particularly, I can answer this question when I get to know.
a little more about the routine and your child's age. But mostly boredom, lack of any social connect, no engagement, all these are making children extremely dependent on gadgets, and they do it for entertainment. But many gadget entertainment is very shallow. It will actually not give you joy or contentment. What gives you joy is when you create something with your hands, when you are able to do something which gives you recognition. These things will not happen with. And that is why the adrenaline rush which children get from gadgets is these games, levels, coins falling, you getting bonus points. All these are the pseudo way of giving you happiness. But they are very short lived. But what happens is your mind gets into a program that you keep doing this. और इसीलिए आप देखिए जब आप बच्चों से बोलिए कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो बच्चे कई बार जवाब देते हैं तो और क्या करें. So it is more about structure and engagement, ma'am. Yeah. Ma'am, Sarita Gaggar, ma'am, please ask your question. Thank you, Achila, ma'am. Thank you. I'm actually very impressed with the all lines. I just want to contact ma'am personally because really adolescents के साथ बहुत issues आ रहे हैं. My daughter Harshita this year उसका BBBP में हमने admission कराया in class 9th. 8th उसने virtual पढ़ाई घर से किया and she उसे ऐसा लगता है कि उसे hostel हमने punish किया है. And the reason only this कि yes वो explore करे, routine बनाए, जैसे आपने कहा कि सब बच्चों को hostel जाना चाहिए, उसीलिए हमने भेजा. But she is completely giving negative कि मुझे आपने punish कर दिया, and now whole day she is doing mobile. I can't control. I'm completely fed up of adolescents का मैं हैंडल ही नहीं कर पा रही हूँ उसके साथ. तो प्लीज गाइड हाउ टू Yes, ma'am, we will definitely talk one-to-one. I'm sure Achla ma'am and Dr. Kasturi will help you with that. Because Yes, it's ma'am. very personal to your daughter. And it is unfortunate that she has come to such a lovely school but has not been able to experience the environment and the culture of the school. And this is what the pandemic problem is. It is literally truncating the real experience and making children totally disoriented. So I'm sure they'll be able to help, ma'am. Thank you for sharing this. Let's not be helpless, ma'am. Parents और teachers कभी भी helpless नहीं हो सकते हैं. ये एक फेज है बच्चों की लाइफ में, और ये जो फीलिंग है मैम, इसका तो आंसर आपको ही उसको देना है कि हॉस्टल जाने का आपका क्या उद्देश्य था और आपने किस मतलब से उसको हॉस्टल में डाला है. I think a very good thing which you can do with your daughter is let her see a little bit more about the school you have chosen. Go through their newsletter, go through their alumni body, go through their website and make her daughter feel that 5 years from now and 10 years from now, when you will grow up and you will be a professional, you will be able to speak with such pride that you are a part of this school. ये जो belongingness मैम बढ़ेगी ना बच्चे की, तो ये फीलिंग कि आपने मुझे पनिश किया है ये खत्म हो जाएगी. सेकेंडली, इफ देयर इज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एज अ मदर, हमने गुस्से में अगर कह दिया है कि तुम ये करती हो इसलिए तुम्हें हॉस्टल भेज देंगे, समटाइम्स वी डोंट मीन इट बट वी से सच थिंग. सो अगर ऐसा कुछ है तो आई थिंक सिट डाउन विथ योर डॉटर एंड मेक हर रियलाइज दैट आपका इंटेंशन क्या था, और यू डोंट मीन टू से दैट यू आर रिजेक्टिंग योर डॉटर. बिकॉज देखिए, जब हम चीजों को रिजेक्ट करते हैं तो बच्चों के लिए नई चीज को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है. लेकिन हम जब बच्चों को किसी चीज से जोड़ना चाहते हैं तो हमें उसको एक्सेप्टेंस और एप्रिसिएशन करना चाहिए, रिजेक्शन. अगर किसी भी बच्चे को हम ये कहें कि मैं तुमसे बिल्कुल दुखी हो गई हूँ, तुम बहुत परेशान करती हो, अब तुम हॉस्टल ही में रहो, तो यू नो वो बच्चे के लिए हमेशा एक बैरियर बन जाता है. So I hope I have answered your question. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. I have a very general question. Yes, ma'am. I want to ask that. My kids are 4 to 5 years, and one is 2 years.
So I have my dreams also. I'm working for them, and I've in this pandemic workload is increasing due to other activities going on, and she is becoming very addictive to phone. And if and somehow I get very fear out of anxiety, somehow frustration, and I just sometimes scold her. So how can I balance that relationship with the parent-child relationship so I can enroll, I can interact with her and make her comfortable? Although I am very friendly with my child, but sometimes I feel that I'm not doing good to him and or her, and then I have my dreams also, so I am preparing for them. I'm not getting that proper timings and that interaction with my child that I want to maintain with my family and child. So how can I do that? Mrs. Tyagi, that's a very good question. And I can see that, yes, your concern is genuine. Working, then so many other I want to responsibilities. maintain. We have fortunately Ah, have a joint family, so I am not that much bothered that I will not do it. Then some other one will do it for me. Other when I am busy or something. But still, that approach with parent and child, I want to maintain that. I was very cool and calm with my child earlier, uh, but मैम after this देखिए, ये pandemic, दोनों चीज due जो to आपके other दिमाग thoughts. में है, ये जो दोनों चीज है, पहली चीज है अगर हम अपने बच्चे को डांटते हैं तो हम खराब माँ नहीं हो जाते हैं. We need No, to scold our this is children. also because Sometimes we need to. But देखो, child thinks that डांटना, she हाँ, began लेकिन to मैम say, देखो, अगर हम "Mummy, I इरिटेट want हो रहे mummy." हैं, हाँ, so you need to explain that कि आप जो भी अपने बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं उसमें डांटना क्या इरिटेशन है, क्या बहुत इनकंसिस्टेंट है, देन बच्चों को ऐसी फीलिंग आती है. सबसे जरूरी है मैम, जब आप मदर हैं जो कि बिजी है और किसी चीज में और बच्चे को आप नहीं चाहते हैं कि वो हर समय मोबाइल में या गैजेट्स में रहे, Yeah, exactly, ma'am. बच्चों को अपने साथ काम कराइए. Whatever you are doing, involve your children into it. किसी भी एज का बच्चा, आप अगर आज किचन में भी काम कर रहे हो तो बच्चा सब्जी अलग कर सकता है, काउंटिंग कर सकता है, बर्तन लगा सकता है. इट इज अ एब्सोल्यूट साइंस एंड आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन. एंड साइंस क्या कहता है, हर उम्र के बच्चे को जरूरत है इंस्ट्रक्शंस की. और जब हम अपने काम में बिजी हैं और हम ये दिखाते हैं छोटे बच्चों को खास तौर से कि तुम्हारे यहाँ आने से परेशानी हो रही है. मैंने कितने घरों में देखा है, बच्चा अगर मम्मी काम कर रही है, बच्चा गया, तुम यहाँ से जाओ, मम्मी अभी काम कर रही. Why can't It's we really look at kitchen, why? ma'am, because I have fear that they may harm themselves. Why do you have that fear? We don't grow with fear, we grow with trust. Why don't you trust yourself that yes, I can teach my daughter to be here and my son to be here and be safe? It is taking responsibility to coexist. आप जितना अपने बच्चों को दूर करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, उनको अपने हर काम से अलग रखेंगे, children will be so frustrated, then they become irritable. उनको लगता है मम्मी हर समय हमें अपने से दूर करती है, और तभी बच्चे फिर या तो गैजेट्स और इसमें लिप्त हो जाते हैं कि ठीक है, हमें भी अब आपके पास नहीं आना है. So don't do this mistake. Involve them. How to like manage everything in slots, because mind sometimes have that. That is why don't make different slots. Make one slot in which you can make your children coexist. Your child can sit there and read with you while you are doing some work. So involve your children into whatever you are doing. If you talk to me separately, then we can talk more about looking at your home situation. But don't get tired. Children are there in our lives for a few years, and as much we can do things with them is important, because those are the memories which children will have, and that is how we build skills. Over to you, Achla ma'am. और धीरेन्द्र कुमार सिंह सर. धीरेन्द्र कुमार सिंह. यस मैम, मैं धीरेन्द्र सिंह बोल रहा हूँ मैम. बहुत Yes, अच्छा sir. आपने प्रोग्राम वेबिनार किया मैम, जिससे बहुत कुछ बच्चों के बारे में और उनको जो आपने बढ़िया तरीके से समझाया कि
मतलब बच्चे स्कूल में फिजिकल अगर साथ में पढ़े तो ज्यादा वो रियली में वो बहुत जरूरी है। और उन बच्चों को क्या है, स्कूल में अगर आप अरेंज करें सारा एक्टिविटी, जैसे जो हम लोग घर पे अभी नहीं करवा पा रहे हैं मैम, जैसे कि सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, थोड़ा बॉडी को फिट रखना। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन क्या पढ़ाई करने के बाद फिर मोबाइल से खेलना भी शुरू कर दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और उनको आप कभी भी पूछो तो हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तुरंत वो स्क्रीन चेंज कर देते हैं। तो ये सब एक प्रॉब्लम तो है मैम। लेकिन आपने ये चीज बहुत बढ़िया ये किया कि चलो बच्चों को आप ठीक है, अच्छा ये किया, सभी पेरेंट्स को डिस्कस करके ना स्कूल को ओपन करने के लिए बहुत अच्छा जरूरी है मैम। नहीं तो बच्चे क्या है ना, ये नेट पे और इस पे मतलब भटक रहे हैं, बच्चे इधर उधर भटक जा रहे हैं, थोड़ा देर पढ़ रहे हैं फिर भटक जा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि स्कूल को थोड़ा सा मीटिंग अरेंज करके कुछ भी करके खोला जाए और थोड़ा सिस्टमेटिक सभी चीज को फॉलो करे, सैनिटाइजर से लेके एक्सरसाइज से लेके सब चीज फिट रहेंगे तो कुछ नहीं, कोरोना से कुछ नहीं होने वाला मैम। बच्चे थोड़ा सा समझदार है और बच्चे को ज्यादा इम्पैक्ट कोरोना से होगा भी नहीं। मेरी बेटी को लास्ट ईयर कोरोना हुआ था, 1-2 दिन में वो ठीक हो गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मोटिवेशनल जरूरी है। और एक्सरसाइज ब्रीदिंग जो मैडम बता रही हैं बार बार, तो ये बहुत अच्छा सेशन आपने अरेंज किया, बढ़िया लगा मेरे को। जस्ट जब अभी ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है मैम, उसमें जस्ट बच्चों को खाली यही है कि क्लास के बाद भी मैम थोड़ा टीचर लोग थोड़ा उनको ये करें कि भाई थोड़ा घूमो फिरो, ये एकदम स्क्रीन में लगा के आंख सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं बच्चे, या तो गेम खेलते हैं या तो फिर क्लास कर रहे हैं, बाकी कुछ भी एक्टिविटी वो नहीं करे। जब हम कुछ कर रहे हैं बोले तो 1 दिन किए 2 दिन किए फिर वो वही हाल, वापस फिर उसी में पढ़ते हैं। तो थोड़ा बच्चों को मैम जो अभी ऑनलाइन क्लास के बाद थोड़ा टीचर के द्वारा जो कुछ बोले जाए ना, तो उनको थोड़ा इम्पैक्ट पड़े, असर हो, थोड़ा इस पे मतलब विशेष ये किया जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। आपने बहुत पॉजिटिव और बहुत ही प्रोएक्टिव बात कही। आई एम श्योर स्कूल अथॉरिटीज विल लुक इनटू इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मिस्टर मनमीत सिंह छाबरा सर, प्लीज बोलिए। Good evening to all the parents, and special thanks to the presenters as on today, principal ma'am and the coordinator ma'am, and especially Saloni ma'am, who has really given us very good views as on today. Kyunki ma'am, actually due to this pandemic, we all are so much concerned कि बच्चों का how are we going to do या बच्चे किस तरह से मैडम आगे प्रॉपरली मैडम ये लोग काम अपना कर पाएंगे। तो मैम एक मेरा सजेशन है ये है आप लोगों को कि लाइक वी ऑलवेज सी, एक मुझको जो बात मेरे को बहुत अच्छी जो मेरे को लगी मैम की, कि इफ द चाइल्ड इज इन ए हॉस्टल, तो हम लोगों ने एक जमीन से पौधे को निकाल लिया जहां पर उसी के तरह के पेड़ थे और हमने अलग कर दिए। एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग विद माय डॉटर। शी इज इन 8th स्टैंडर्ड, सुची गौर छाबरा। मैम मैं एक आपसे रिक्वेस्ट मैम मैं ये करना चाहता हूँ, टिल द टाइम द स्कूल्स आर नॉट गेटिंग रीओपन अगेन, प्लीज मैम आप इन्हीं के जो 8th स्टैंडर्ड के मैम जो बच्चे हैं, सिमिलरली 9th वाले बच्चों के साथ में मैम कुछ आप एक इंटरेक्शन सेशन रखिए बच्चों का आपस में। मैडम हो क्या रहा है कि बच्चा जब मैडम घर पे है अभी, तो हॉस्टल को ही मैम वो फील मिस कर रहा है। जैसे अब इफ आई एम टॉकिंग यू अबाउट माय डॉटर सुची, तो उसकी सभी फ्रेंड हॉस्टल में ही है, घर पे तो मैम है बट शी इज मिसिंग नाउ हॉस्टल। आफ्टर सम टाइम्स अभी वो बोलना शुरू होगी कि मम्मा मुझको नहीं अच्छा लग रहा है, आई एम गेटिंग बोर्ड, आई वांट टू गो अगेन टू हॉस्टल, आई एम मिसिंग माय स्कूल। लाइक वी लव इट अ लॉट दैट शी इज सेइंग, बट मैम साथ ही साथ हम लोग मैडम ये भी चाहते हैं कि एटलीस्ट आप लोग मैडम ऐसा कुछ आप एक ऑर्गेनाइज कराइए जिसमें इन्हीं के क्लास के बच्चे, सपोज करिए कि आप 8th की टीचर हैं, तो आप 8th के बच्चों को सबको मैम कलेक्टिवली लेकर के गिव अ प्रोजेक्ट और गिव समथिंग टू डू, और सो दैट एटलीस्ट बच्चे कुछ 1-to-1 मैम बात कर सके आपस में, ताकि मैम एक गैजेट का वी कैन टेक ए गुड यूज। मैम सर बहुत अच्छी बात कही आपने, और स्कूल्स की तरफ से भी सर पढ़ाई और क्लासेस के अलावा भी एक जो सोशल चिट चैट है, जैसे अभी हम लोगों ने कई स्कूलों में करा है, वी कॉल इट ई चर्चा। ये 20 मिनट का है जिसमें कोई पढ़ाई नहीं है, खाली बच्चों को एक दूसरे से बात करनी है। और कभी कभी टीचर कोई एक करंट अफेयर डिस्कस कर देती है कि तुम लोगों ने ये देखा टीवी में, तो तुम लोग को क्या
लगता है। तो कभी करंट अफेयर्स, कभी कोई सोशल सिचुएशन, कभी कोरोना से रिलेटेड कुछ, कभी सिंपल चीजें जो कि बच्चों को अफेक्ट करती है। तो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा और इंटरेक्शन हम बढ़ा सकें, आई थिंक, अगर मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर, और Exactly. थोड़ा सा इंगेजमेंट, आई थिंक वो भी बच्चों के इसको बहुत कुछ जो है जो मोनोटनी है और जो ये गैजेट डिपेंडेंस है उसको कम Exactly. करने की कोशिश एंड सेकंड थिंग मैम, लाइक कुछ मैडम ऐसे प्रोजेक्ट लाइए जिससे बच्चों को फिजिकली वो लोग कुछ करके एक जॉइंट एफर्ट में कर ले। जैसे मान लीजिए 5-5 बच्चों के कोई ग्रुप बन जाए, सो दैट एटलीस्ट मैम जब ये हॉस्टल दोबारा से रिस्टार्ट हो तो एजुकेशन मैम बच्चे वहां पढ़ने हैं तो एक इनके पास वो भी मेमोरी रहे कि याद है तूने ये किया था, मैंने ये किया था, जॉइंटली हम लोगों ने ऐसा कुछ किया है। सो मैम एक बच्चों का आपस में बॉन्डिंग भी हम एक मजबूत मैम कर सकते हैं। Very nice suggestion, sir. And I'm जी, sure school is making a note, and we'll definitely get back on that, sir. please. But And really, ma'am, thanks for today's ma'am counseling session. We really, ma'am, enjoyed, and it was very, very much thinking to the depth of the things, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. Thank Good evening. Yes, ma'am. My daughter's visual art in class 7 commerce section. Ma'am, she's scared about हॉस्टल। वो मैंने हॉस्टल जाने से बहुत डर है, उसको लग रहा है पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, क्या होगा। मैंने उसका इस तरह का फीलिंग्स है, तो उसके लिए क्या करूं, क्या? मैम अगर बच्चे की ये फीलिंग है, उसका कितने दिन पहले एडमिशन हुआ है, आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप जरूर से टीचर से बात करें, क्योंकि ये जो फियर और एंजाइटी है बच्चों में, कई बार क्या होता है बच्चा कुछ टीवी पे देख लेता है, कुछ सुनता है, उसको किसी तरह की वरी और ये एंजाइटी आ जाती है। तो उसमें बहुत जरूरी है कि हम समझने की कोशिश करें कि इसकी एंजाइटी का जड़ कहाँ है, क्या वो चीज है जिससे उसको ये लग रहा है। क्योंकि देखिए ये रियलिटी तो है नहीं, ये तो बच्चे का एक थॉट है ना, ये कोई फैक्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है स्कूल में जिससे कि उसको लगे। तो ये जो फियर और एंजाइटी है, यस मैम, ये कोविड की वजह से है या उसने कोई सिचुएशन देखी है जिसमें उसको लग रहा है, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि रीजन कहाँ से आ रहा है। क्या वो किसी चीज से डर के घबरा रही है कि मैं वहां जाऊंगी तो अकेले हो जाऊंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज्यादा आप पे डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंटली चीजें मैनेज नहीं कर सकती है, तो उसको ये डर लग रहा है कि अगर मैं जाऊंगी तो मुझे अपने से करना पड़ेगा। तो बहुत से रीजंस हो सकते हैं मैम। तो ये आपको एज अ मदर समझना पड़ेगा कि उसका ये जो फियर है, क्योंकि देखिए फियर फैक्ट नहीं होता है, फैक्ट जो है वो हमारे रियल एक्सपीरियंस से बनता है। तो उसके जो एक्सपीरियंस अभी तक हॉस्टल में है, उसमें ऐसी कोई घटना अगर हुई है जो आपको लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो गेट बैक टू द क्लास टीचर, टॉक टू प्रिंसिपल मैम, शी इज ऑलवेज अवेलेबल and she has such years of experience of handling young girls and making them wonderful responsible people, so she will definitely be able to guide you. Okay, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, here I would like to add a little more. Just don't worry, ma'am. जिस दिन वो यहाँ आएगी and she will meet us, you yourself, you will realize that certain things maybe as a mother she is not able to share with you, but she will start sharing with us. That's the difference that you will find when you will come to Vidyapeeth. Okay, ma'am. This environment itself will make the whole difference for her. Achala, I want to say something here. Yes, ma'am. I'm listening very carefully to each and every parent. Okay, I'm understanding the feelings and what exactly my responsibility and the school's responsibility, sir. Of course, we have given little time to relax for the teachers also. Now, by this 26th of this month, all teachers are coming, so that we will try to talk to each and every child, and we will have a lot of counselings, and not that any stress or any to the children. It's not like that. We will have very wonderful programs. I'm very thankful to all the parents that they have shared. Really, they have openly shared the things, and not only the interactive sessions and the games and sports activities also we will start, counselings also we will start. And what exactly the fear factor, because I know that I'm very confident here, those children who are here, they're really wonderful children. The best part is they will listen to teachers and me.
and we have all capacity to make them to understand, and children listen. That's the beautiful thing here. So that we will take care of each and every child. I'm not telling only those who are here. We will talk to each and every child, and personal counseling or whatever it is, we will take care. And I'm noting down what exactly the parents wanted here, whether the sports, whether education, whether fear factor. So everything we will try to take care of that. Please, you continue. Once again, I'll come back. Madam Thank you, Lavanya, Kasturi you ma'am. want to ask your question, please? Lavanya? Yes, sir. Mayank Jindal, sir. Please, you can ask your question. Yeah, very good evening. Good evening, sir. Thanks a lot, Ms. Saloni, Dr. Kasturi, and Ms. Achla. And I, instead of having a question, I have some opinion during this period. In fact, I can say initial days of pandemic were difficult for us, and then we changed our thinking on this, and we find that perhaps this is the best period of our life as a family. And certain tips that we apply during this period is, as you rightly said, that addiction of the gadgets and the loneliness and the, so those things we especially attacked, and we thought that why don't we have something new together that we can do. So we started, in fact, applying on ourselves. Like I started cooking, playing certain many games on a regular interval. Even she also started. My daughter, she got an admission in 11th grade this year only. So far she has not been there, but cooking, writing, doing many painting and sketching, and find out some time to do some yoga. Perhaps it is helping a lot. I myself has not watched TV for last 2 months. Wow, great, sir. Thank you for sharing that, Mr. Jindal. Thank you for sharing that. It is really just a fantastic experience. A lot of stress. I totally agree with you, Jindal sir. I think my grown-up son, 27-year-old, I think it was pandemic that he spent 9 months, and he was telling me that after class 12, this is the longest I have stayed at home. And he learned cooking. We did a lot of gardening. We spent time with pets, and we basically opened all the old boxes and took out things and went on a journey of their childhood, created a scrapbook, Jindal sir. I am extremely proactive. So I have already prepared a scrapbook that when my granddaughter or grandson, whosoever has to come in my life 20 years from now, when they are going to study in their history book that there was a pandemic in year 2020, I am sure my granddaughter will ask me that, Dadi, what did you do? I will have a lot of masks and lot of pictures to share with her. Absolutely. And that is what is being productive and proactive in pandemic. We can never be helpless. We have to make a choice. We have to do things, and for sparing their time and listening here, and also asking wonderful questions. Rather, more than them, I was more educated today, to tell the fact, because what exactly as an administrator, as a principal, what all the steps I have to take further, what all my plans will be. I'm very clear about the things. So I will not disappoint any parent here, because with lot of belief and lot of hope, we have come to Birla Balika Vidyapith. So that only few days are there for the online classes again. One of the parent asked when the school is going to happen, when is going to open. And almost 1 or 2 states, I think in the north itself, they started. They have, I got a message from them within 15 days or 20 days like that. But anyhow, we have to follow the government instructions. Whatever the state instructions as central instructions, we will get it. We will do it. But I have noted down each and every point of the parents, and also many parents, they were talking also, so that we will very religiously, we will follow and we will satisfy the parents as well as the children. And I'm really thankful to each and everyone. And here, Saloni Priya ma'am, as usual, wonderful it is. You attracted the attention of each and every parent. It's wonderful. And the things which I liked here is blend of love and safety. Wonderfully, you spoke about that. And holistic integration of education, multidisciplinary skill building,
That's really good. And especially about the gadget management, you told it is really attracted so many. This is the universal fact, I can say. Every parent is worried. But somewhere we will believe our children. Once they come back or whatever it is, they will understand the things. They will understand. Absolutely, It's ma'am. not a- And the best way to bring up children and teenagers is give them responsibility. Trust them Exactly. and they will lead. Exactly. So again, boarding school environment and social and emotional wellness you talked about. Really, I'm proud of my school. Really, I'm missing the children. Sometimes missing the Absolutely, ma'am. parents as well as the children. Even all my staff also the same thing. And finally, all about acceptance, appreciation, and communication. Definitely, we will follow. And you have given a wonderful suggestion here, that is school leaders and parent partnership. So it we will be more into this. So we will take care of this. And there was, you told about the tree and all. I was thinking about, I was imagining all my children here, because we don't know what colors, what fragrance they will give when they grow up. So that Absolutely, ma'am. definitely we have to take care of, we have to nurture them in a proper way. So I'll take whole and soul responsibility of nurturing all my students, those who came here, and the parents, those believed in us. So with these few words, once again, I thank you, Saloni ma'am.